Hi all, welcome to the fourth episode of our 10-day SQL series. Today we are going to see a very interesting topic in SQL and ये एज अ फ्रेशर आपके SQL के हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा. That is the difference between delete, drop and truncate in SQL. After that we will see how to alter the column and update the rows. So let's get started. We will start with table cloning because when we do the practical for delete, drop and truncate, I do not want to touch my original data. So I will create a duplicate copy of that table and will do the practical in that. So basically, table cloning means creating a duplicate copy of an existing table. Depending on our requirement, we can copy the table's whole structure like the column and data type, and also we can copy the table structure as well as the data which is present inside that table. Okay, and the syntax for it is select all into employee backup is our second table जिसमें मुझे सारा डेटा कॉपी करना है कौन से टेबल से एम्प्लॉय टेबल से so this is the syntax for table cloning. Here we have a student table जिसमें student id name email age mark city हमारे field है. Now I want a backup for the student table, so for that we will use the table cloning. And how we can use that? The syntax is select all into. इसे हम सारे डेटा को किस में बैकअप करेंगे? सपोज वी आर क्रिएटिंग अ स्टूडेंट बैकअप टेबल, सो आई विल गिव द नेम स्टूडेंट बैकअप. सिलेक्ट ऑल इनटू स्टूडेंट बैकअप फ्रॉम. किस टेबल से हम सारा डेटा उठा रहे हैं? स्टूडेंट टेबल से हमारा, सो फ्रॉम स्टूडेंट. Select and execute it. Okay, as you can see the 8 rows are affected. Let's display the result also. Select all from student backup. So सेम डुप्लीकेट टेबल हमें यहाँ पे मिल चुका है जिसमें हम सारे ऑपरेशन सब परफॉर्म करने वाले हैं. So we are going to start with our very first delete operation. Delete is used to remove record from a table. It is best used to clear data safely row by row. Row by row means it will remove data one row at a time, not the entire table at once. We can use the delete when we need to remove specific record based on some condition. Like suppose मेरे पास एक order table है and in that table मेरे पास जो cancel order detail है वो भी उस table में है. Now I want to remove the cancel order detail. So उसके लिए मैं condition apply करूंगी delete everything from the table where order equals to cancel. So it is used based on some condition. Okay, and it is best used for routine data cleanup. Like suppose मेरे पास बहुत से inactive users हैं, मुझे उनकी information delete करनी है, so I can use delete there. And one very important thing इसमें आप याद रखना, यहाँ पे हम condition लगा के delete statement का use करते हैं. Suppose अगर आप condition लगाना भूल गए तो in that case you will lose all your data. And the syntax for it is delete all from student. Student is our table, so delete all from table where id equals to 7. It is our condition. Now let's see how we can use the delete statement practically. Suppose यहाँ पे मुझे सिमरन की डिटेल डिलीट करनी है. Okay, so how we can do that? Delete from student backup table का हम यूज करेंगे जो हमने क्रिएट किया था. So select from student backup where सिमरन की आईडी क्या है? 8. Okay, so select where student id equals to 8. Okay, one row affected. Now here, as you can see, now we do not have Simran detail present here, so it is deleted from our student backup table. So this is how we are going to use the delete statement for deleting any specific row. Now let's see the truncate statement. So we use the truncate statement when we want to empty the entire table completely and keep the table structure as it is. For example, suppose we have a table of class of student 9. 9th क्लास के स्टूडेंट 10th में चले गए एंड 9th क्लास में न्यू स्टूडेंट आए. सो हमारा जो टेबल है उसमें सपोज स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी एंड अदर डिटेल है. सो मैं सिर्फ जो ओल्ड स्टूडेंट है उनका डेटा डिलीट करना चाहती हूँ एंड टेबल स्ट्रक्चर को एज इट इज रखना चाहती हूँ. सो फॉर दैट आई विल यूज द ट्रंकेट स्टेटमेंट. सो बेसिकली ट्रंकेट will delete the data which is present inside the table and keep the table structure as it is.
It is best used for clearing old record of student. Okay, and also the key risk of is truncate is it bypass most row level database triggered. Now triggered means suppose अगर आपने SQL में ट्रिगर बनाया है, यानी आपने ऐसा ट्रिगर बना के रखा है अगर मेरे टेबल में कुछ भी अपडेट होता है तो मुझे एक मेल मेरा मैनेजर को जाना चाहिए। ओके, तो ये ट्रिगर होता है बेसिकली। जब भी आप ट्रंकेट का यूज करते हो ये रो बाय रो काम नहीं करता, ये सारे रो को एक साथ डिलीट करता है। सो इट ऑल्सो बाईपास द ट्रिगर्ड एंड द सिंटेक्स truncate is that is truncate table and you have to give the table name. Now let's see how we can use the truncate practically. So I have here the student backup table. Now I wanted to delete all the data which is present inside the student backup and keep the table structure as it is. So I'm going to use the truncate statement for it, and the syntax for it is truncate table and अब आपको टेबल नेम देना। ओके, दैट इज स्टूडेंट बैकअप। Select this and execute. Okay, the command is completed successfully. So here as you can see we only have the structure of the data, but जिसमें data था present वो अब नहीं है। So with the help of truncate statement we can delete the content which is present inside the table and keep the table structure as it is. Now let's see the drop statement. It is used to remove the table permanently. Suppose आपने एक table बनाया and now you do not need that table any longer. So in that case you can use the drop statement to remove that from the database dictionary forever. It is best used for removing old backup table and cleaning up the retired feature schema. And the key risk for is that once you delete the table you cannot recover it, and also there is no warning sign. Syntax for dropping the table is drop table and you won't have to give the table name. So here now I don't need that student backup table now, so I'm going to drop it. For that the syntax is drop table and the table name student backup. Select execute. कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, यानी अब हमारा ये टेबल ड्रॉप हो चुका है। अब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यू विल गेट this error that invalid object name student back. Now we are going to see the difference between alter and update. Alter is used to change the structure of a table. Suppose we have a student table. Now I wanted to add a new column in that table which is the student phone number. So with the help of alter statement, I can add the column, remove the column and enforce a new rule. That which means suppose एक city column already मेरे student table में है. Now I'm noticing that कुछ student है जो अपनी city fill नहीं कर रहे हैं. So मैं उस city में not null constant लगा सकती हूँ with the help of alter. It is commonly used for adding the column, deleting the column and changing data type also. Syntax for alter is alter table then table name which is here is student, add phone number, हमारा जो new column होगा add phone number and data type for that column. Then we have update. Update is used to modify the actual value stored inside the row of a table. Suppose now we have a student and recently उसने अपना phone number update किया है, so with the help of update statement we can update the value which is stored inside the row of a table. Okay, it does not change the column name or data type, it only modify the information sitting inside them. So basically it will not impact your on the column, but it will use to change the particular value present inside the column. Okay, it is commonly used for changing user password. मतलब हम जब अपना पासवर्ड अपडेट करते हैं then in that case we will use the update, updating the account balance or fixing a typo in a customer name. अगर किसी ने by mistake गलत customer name enter कर दिया है तो with the help of update you can update that. Syntax for it is update student. Here it's a table name. So update student set phone number. यहाँ पे हम new phone number set कर रहे हैं student के लिए where user ID equals to 42. Now let's see how we can use the alter and update practically. So here we have a student table and अब इसमें मुझे एक new column add करना है for entering the student phone number. So for that we are going to use the alter statement. So alter table
किस टेबल को हम ऑल्टर करेंगे? स्टूडेंट टेबल को। सो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, अब हमें कॉलम नेम देना है। ओके, ऐड कॉलम नेम, यहाँ पे मैं फोन नंबर लिख देती हूँ। और कॉलम जब आप ऐड करोगे तो उसका डेटा टाइप भी होगा, तो यहाँ पे हमें डेटा टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। ऐड फोन नंबर इंट, executed, command completed successfully. So now here you can see that we have a phone number column added. We can also drop this column with the help of alter statement. How we can do that? Alter table student drop column phone number. So we have dropped the phone number column. Now let's see the update command. So यहाँ पे सिमरन की एज 21 है। ओके, नाउ मुझे इसको अपडेट करके 25 करना है। So with the help of update command, we can do that. Update student, table name जो है हमारा, update student set age equals to 21 where, एंड यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप where का यूज करके कंडीशन नहीं दोगे और सिर्फ इतना ही एग्जीक्यूट करोगे तो ये जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है स्टूडेंट, सबकी एज 21 सेट हो जाएगी। इसीलिए जब भी हम अपडेट कमांड यूज करते हैं वहां पे एक कंडीशन अप्लाई करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर जो वैल्यू है वही अपडेट हो, पूरे टेबल पे इम्पैक्ट ना करे। वेर, सो यहाँ पे वेर आईडी इक्वल्स टू 8, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब सिमरन की एज 25 थी, सॉरी। Here we will update the age of Simran from 21 to 25. So with the help of update we can do that. Update student table name जो हमारा है, update student set age equals to 25 where student ID, सिमरन की student ID क्या है 8, तो student ID equals to 8, डिस्प्ले कर रहे हैं हम रिजल्ट को। तो आप देख सकते हो सिमरन की एज 21 से 25 अपडेट हो चुकी है। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अगर आप वैर लगा के कंडीशन नहीं देंगे और सिर्फ इतना ही एग्जीक्यूट करेंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट एज इक्वल्स टू 25, तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है सबकी एज 25 हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक यू।